Hello everyone, welcome to my channel. So far we have discussed theoretical part of text file handling along with 13 exam oriented questions of text file handling. In this video we will start binary file handling. As you all know, in text files data is stored as a series of characters and each character is stored in memory using a single byte. But in case of binary files, information is stored in the same format in which the information is stored in memory. We can open binary files in normal text editor, but we cannot read the content present inside the binary file because binary files are encoded in binary format, which can be understood only by a computer or a machine. These are some examples of binary files. For example, document files such as PDF, doc files, Excel file, image files, for example PNG, .jpg, GIF files, video files such as MP4, 3GP, audio files such as MP3, then database files such as MDB, SQLite, archive files, zip file, rar file, and executable files. In Python, if we want to read or write into the binary files, then we need to use two processes which are pickling and unpickling. So we will discuss pickling first. It is a process in which the data stored in Python object such as list, tuple, dictionary is converted into the byte stream and then it is stored in the hard disk inside the file for future use. Basically pickling एक process है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा डेटा प्रेजेंट है हमारे पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर. पाइथन ऑब्जेक्ट क्या है? लिस्ट, टपल, डिक्शनरी, इन सभी को हम लोग पाइथन ऑब्जेक्ट बोलते हैं. पिकलिंग प्रोसेस में क्या करते हैं हम लोग, हमारा जो डेटा स्टोर है हमारे पाइथन ऑब्जेक्ट के अंदर, फॉर एग्जांपल लिस्ट, टपल या डिक्शनरी, उस डेटा को हम लोग कन्वर्ट कर देते हैं बाइट स्ट्रीम में सो दैट वी कैन राइट द डेटा इनटू द बाइनरी फाइल. सो पिकलिंग प्रोसेस हम लोग यूज करते हैं राइट करने के लिए. नेक्स्ट इज अनपिकलिंग प्रोसेस. It is just the reverse of pickling process. It is a process in which the byte stream is converted back into the Python object such as list, tuple, dictionary, etc. Suppose आपने फाइल के अंदर डेटा राइट कर दिया है और फाइल हार्ड डिस्क के अंदर स्टोर है. अब आप उस फाइल के डेटा को रीड करना चाहते हैं, बट ये बाइनरी फाइल है. बाइनरी फाइल के अंदर जो डेटा स्टोर है वो बाइनरी फॉर्मेट में स्टोर है. हम उसको रीड नहीं कर सकते हैं बिकॉज वो ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में नहीं है. तो हम अनपिकलिंग प्रोसेस यूज़ करेंगे. अनपिकलिंग प्रोसेस क्या करता है, उस डेटा फाइल के अंदर जो बाइनरी डेटा फाइल है उसके अंदर डेटा स्टोर है बाइट स्ट्रीम में. अनपिकलिंग प्रोसेस से क्या होगा, वो बाइट स्ट्रीम का डेटा कन्वर्ट हो जाएगा पाइथन ऑब्जेक्ट में, मतलब लिस्ट, टपल या डिक्शनरी की फॉर्म में, जो कि एक ह्यूमन रीडेबल फॉर्म है. तो हम लोग वो डेटा रीड कर पाएंगे. सो आप लोग समझ पाए होंगे कि हम लोग पिकलिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं जब हम डेटा राइट कर रहे होते हैं और अनपिकलिंग प्रोसेस को यूज़ करते हैं जब हम डेटा को रीड कर रहे होते हैं. नेक्स्ट देखते हैं. टू इम्प्लीमेंट पिकलिंग एंड अनपिकलिंग प्रोसेस इन पाइथन एनवायरनमेंट वी नीड टू इंपोर्ट पिकल मॉड्यूल. अगर हमें अपने पाइथन एनवायरनमेंट में बाइनरी फाइल्स में डेटा रीड या राइट करना है, then we need to import one module which is pickle module. और इस pickle module के अंदर हम दो functions use करेंगे. One is dump, second is load. Dump function is used to write the data into the binary file, and load, this function is used to extract the data from the binary file. This is the theoretical part of binary file handling. From next video we will start discussing some exam oriented questions on the binary file handling. Thank you.